Hello everyone. We realize your need to understand English in a more simple way, and thus we bring to you these videos for you to strengthen your hold on basic English grammar. Whether you're a student of English language or you're preparing for any entrance exam, these videos we hope are just the thing that you're looking for. Since our mother tongue is Hindi, these videos will be conducted in the mix of both English and Hindi for you to understand English language better. So without any further ado, let's get it started. First and foremost, we will see the structure of English and Hindi sentences. Now on screen you can see these two Hindi sentences. The first Hindi sentence is Ram Sita se prem karte hain. And the next sentence is मैं खाना खाता हूँ. Now if we transform these sentences to English, they would read as Ram loves Sita and I eat food. So Ram Sita se prem karta hai becomes Ram loves Sita, and मैं खाना खाता हूँ becomes I eat food. Now there in any kind of sentences, whether in Hindi or in English, there are two basic parts of any sentence. One is subject and one is predicate. Now what is subject and what is predicate? Subject is that part of any sentence which names a person or a thing, whereas predicate is that part of any sentence that says about the subject. In Hindi, if I want to make it clear, is subject वो होता है जिसके बारे में बात हो रही हो, and predicate वो होता है जो बात हो रही हो. If we want to understand in these two sentences what is subject and what is predicate, so राम सीता से प्रेम करता है, राम के बारे में बात हो रही है, राम is the subject here. So if we want to make it clear, Ram is the subject in both the sentences. सीता से प्रेम करता है or loves Sita. Now Ram is doing what is being spoken about Ram. राम के बारे में ये कहा जा रहा है कि वह सीता से प्रेम करते हैं. So this part, the whole part, this becomes your predicate. मैं खाना खाता हूँ, I eat food. Now I और मैं किसके बारे में बात हो रही है? मैं मेरे बारे में बात हो रही है. I eat food. Now these are the parts, they are the subject. क्या बात हो रही है? मेरे खाने के बारे में बात हो रही है कि मैं खाना खाता हूँ या I eat food. तो जो बात हो रही है उसको हम predicate कहते हैं. Is that clear? Now here we have given the exact definition of subject and predicate. Subject, the part that names a person or thing, is called subject of that sentence. Predicate, the part which says about the subject, जो subject के बारे में बात हमें बताता है, उस part को हम predicate कहते हैं. It has two parts, one is verb and one is object. Many a times many people say that predicate and object are the same thing. However, they are not. Predicate में verb और object दोनों parts आते हैं. So now let's understand what is verb and what is object. These are the two parts of predicate as we understood previously. So verb is that word which tells us what a person, animal or thing is doing. Verbs show action, so they are called action words. Any action, be it sleeping, सोना, सोते हुए हम मूव नहीं कर रहे लेकिन हम एक एक्शन कर रहे हैं सोने का, तो वो एक वर्ब हुआ. आप डांस कर रहे हैं, वो एक वर्ब हुआ. आप चल रहे हैं, यू आर वॉकिंग, वो एक वर्ब हुआ. सो दीज आर ऑल वर्ब्स, दीज आर एक्शन वर्ड्स. व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट इज बीइंग affected by that action. Let's take some examples in the next slide. Now we've taken 3 sentences to understand this better. In Hindi, किसान खेत की जुताई कर रहे हैं becomes farmers are plowing the field in English. मैंने फिल्म देखी, this becomes I saw the film in English. हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, this becomes we are learning English. Let us identify these parts of sentences, subject, object and verb,
in all these sentences, in Hindi as well as in English. Let's understand and underline the subjects in each of these sentences in Hindi as well as in English. किसान खेत की जुताई कर रहे हैं, किसके बारे में बात हो रही है? फार्मर्स, किसानों के बारे में बात हो रही है. So clearly किसान और farmers becomes the subject. Let's underline these two. मैंने फिल्म देखी, I saw the film. किसने फिल्म देखी? मैंने फिल्म देखी. This becomes the subject. I और मैंने becomes your subject. हम अंग्रेजी सीख रहे हैं. We are learning English. किसके बारे में बात हो रही है? हमारे बारे में बात हो रही है. We are learning English. Then हम and we becomes subject in both these sentences. Now let's change the color of the pen and understand which are the verbs here. Okay. So किसान खेत की जुताई कर रहे हैं. Farmers are plowing the field. What action is being done here? क्या action हो रहा है यहाँ पर? जुताई करना, प्लाव करना, ये एक्शन है. सो जुताई करना और प्लाव करना ये आपके वर्ब्स हुए. सो लेट्स अंडरलाइन द वर्ब्स हियर. जुताई कर रहे हैं आर प्लाउइंग. दीज आर द वर्ब्स. मैंने फिल्म देखी, आई सॉ द फिल्म. देखना इज ऑल्सो एन एक्शन, सो दैट बिकम्स योर वर्ब. यहां पर देखी एंड यहां पर सॉ. हम अंग्रेजी सीख रहे हैं. वी आर लर्निंग इंग्लिश. नाउ लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज वर्ब्स. दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वर्ब. वो भी आप कुछ एक्शन कर रहे हैं, कुछ आपकी तरफ से हो रहा है. सो लर्निंग, आर लर्निंग एंड सीख रहे हैं बिकम्स वर्ब्स. नाउ लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन and let's identify what are the objects. किसान खेत की जुताई कर रहे हैं. Farmers are plowing the field. क्या चीज उस verb से, क्या ऐसी चीज है इन sentences में जो verbs से affect हो रही है? Field affect हो रही है, खेत affect हो रहा है. So खेत and the field here, these are your objects. मैंने फिल्म देखी, आई सॉ द फिल्म. दिस इज वेरी क्लियर. क्या देखा गया? फिल्म देखी गई. फिल्म बिकम्स योर ऑब्जेक्ट. हम अंग्रेजी सीख रहे हैं. वी आर लर्निंग इंग्लिश. इंग्लिश, अंग्रेजी, क्या सीखा जा रहा है? इंग्लिश, अंग्रेजी सीखी जा रही है. सो दिस बिकम्स योर ऑब्जेक्ट. नाउ इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द बोर्ड व्हाट is the difference between the structure of sentences in Hindi and in English. If we have to write it down, the structure of sentences in Hindi are: first comes subject in a Hindi sentence, then comes object in a Hindi sentence, and finally comes verbs in Hindi sentence. Hindi sentence में verbs हमेशा end में use होते हैं. Similarly in English, if we see, first comes subject, then comes verbs, and finally object. So this is the main difference between any sentence of Hindi and English. These are the main structural differences of any sentence in Hindi and English. We hope you understood this lesson. Let us know in the comments. Thank you.